जी अस्सलाम वालेकुम जनाब. Okay, I'm thankful to Mr. Shahid Farooq who made the environment a bit lighter. Here are some of the expected topics, but I would like to share some instruction with you. देखिए जो आपका P1 है ना उसमें क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन 1 का A पार्ट जो है इट्स आंसर लाइज विद इन द क्वेश्चन. You are allowed to simply copy and paste 3 sentences which are relevant. आपको उसने कोई स्पीच का एक्सट्रैक्ट दे दिया है, कोई नॉवल का एक्सट्रैक्ट दे दिया है, न्यूज़पेपर का एक्सट्रैक्ट दे दिया है, and if there are 3 lines you can copy them word for word. No need to even change it or to rephrase it. Though if you are capable of rephrasing it, it's okay. Coming to compulsory question part B. Part B में आपने रखना है फॉर्मूला बस वही 5 का. पहले आप एक सरफेस फीचर आइडेंटिफाई करेंगे और उससे फिर रिजल्ट निकालेंगे. For example, if you are shown a photograph or a cartoon or a portrait or an image or a painting or something like that, there was a famous cartoon showing Jinnah and Gandhi engaged in playing chess. Jinnah was sitting on a seat and Gandhi was seen a little bit elevated from the ground. अब उन्हें आपकी ऑब्जर्वेशन चेक करनी थी. ऑब्जर्वेशन ये लिखोगे कि Jinnah and Gandhi both are engaged in playing chess, और आप साथ लिखोगे chess is a complex and time-taking game, and Jinnah is focusing himself on the chessboard, whereas Gandhi has been shown elevated, which means Gandhi is living in his own world. He is not in congruity with Jinnah's views. गांधी का जिन्ना के व्यूज से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपनी दुनिया खुद लेके आया, उसके अपने व्यूज हैं, उसकी अपनी आइडियोलॉजी है. फिर आप लिखेंगे कि चेस गेम आपको नजर आ रही है, तो उससे आप इन्फ्रेंस क्या निकालते हैं. इन्फ्रेंस ये है कि द क्वेश्चन ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, फ्यूचर ऑफ इंडिया वाज कॉम्प्लेक्स वन. इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ पेशेंस, इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ टाइम, एंड सिंस लॉर्ड वेवल इज होल्डिंग ए वॉच इन हिज हैंड, दैट मीन दैट ब्रिटिश आर लूजिंग इन पेशेंस. They too want to settle the future of continent as soon as possible. नीचे टाइमलाइन दी थी उन्होंने 1946 की फोटोग्राफ है, 1945 की है. Coming to C part, which become B part, another question. आपने कीवर्ड याद रखना है कि चीज डिस्क्राइब करते करते आपने एक्सप्लेन करना है, उसको हम कहते हैं डेवलपिंग योर पॉइंट. आपने पॉइंट जब तक डेवलप नहीं किया, यू आर नॉट गोइंग टू क्रॉस द लेवल फ्रॉम 2 to 3 और 3 to 4. अगर आपने फैक्ट लिख दिया कि जी व्हाई डिड गांधी टॉक्स फेल, और उसमें आपने लिखा कि जनाब 1 पॉइंट ऑफ फेलियर वाज कि गांधी हैड रिजेक्टेड 2 नेशन थ्योरी. अब आप जितनी मर्जी इसको लिख दोगे, इट विल रिमेन डिस्क्रिप्शन अनलेस यू डेवलप द पॉइंट. यू विल डेवलप द पॉइंट बाय सेइंग कि गांधी इंसिस्टेड दैट ही कुड नॉट सी एनी एग्जांपल इन द वर्ल्ड हिस्ट्री वेयर ए ग्रुप ऑफ पीपल, ए कम्युनिटी, जस्ट बाय चेंजिंग इट्स रिलीजन had started demanding a separate homeland. जब तक आप ये नहीं लिखेंगे आपका पॉइंट डेवलप नहीं होगा, रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ वर्ड. डेफिनेटली एक पैराग्राफ की डेफिनेशन होती है. पैराग्राफ शुड बी व्हाट द कैम्ब्रिज विल कॉल चंकी वन. इट शुड बी ए चंकी पैराग्राफ, अच्छे साइज का होना चाहिए. 100 वर्ड प्लस अच्छा साइज का पैराग्राफ बनता है. बहुत छोटा पैराग्राफ जाहिर सी बात आपकी बात आप कन्वे कर ही नहीं सकते उसमें. तो 3 पैराग्राफ्स एंड 3 रीजंस. 99% of the topics have 3 reasons. There are only some topics like why did second round will conference fail, or why was Simon Commission a failure, or why was Simon Commission sent. इसमें 2 रीजन बन जाती है, तीसरी बन जाती है. लेकिन आपने याद रखें हर पैराग्राफ में अपने डिस्क्रिप्शन के साथ एक्सप्लेनेशन जरूर करनी है, जिसको मैं कह रहा हूँ वर्ड यूज कर रहा हूँ कैम्ब्रिज का. डेवलपिंग योर पॉइंट, डेवलपमेंट इज द की वर्ड फ्रॉम 2024 onward. Is that clear? Coming to D part of question 1 and C part of remaining question, एक फर्क याद कर लें. 1D में कंक्लूजन या एवेल्युएशन का मार्क होगा 1, और C part of question 2, 3, 4, 5 में कंक्लूजन के मार्क्स हैं 2. प्लीज रिमेंबर इट एट द टिप ऑफ द डे. क्वेश्चन 1 का D पार्ट है, चाहे प्लान उसकी उतनी रखें जितनी C के पार्ट की रखी है, लेकिन उसका मार्क 1 है. और आपने 4 पैराग्राफ लिखते हैं. 4 पैराग्राफ का मतलब ये नहीं कि रीजन भी 4 ही होंगे.
There are some questions where there are not more than 4 reasons available. But if you can accommodate 6 reasons, एक पैराग्राफ में एक रीजन एक्स्ट्रा लिख दी, एक और पैराग्राफ में एक रीजन लिख दी, but unless you develop that reason, that will not be counted a level 4 answer. Level 5 का तो मतलब होता है you have written a very good judgment. For example, अभी बात हो रही थी अल्लामा इकबाल एंड चौधरी अहमद अली के कंपैरिजन की. अगर आपने एक अच्छी जजमेंट लिखनी है तो let me share it with you. Yesterday, one of my female candidates wrote it in the evening classes. कि आप लिखेंगे कि इकबाल वर्क इज मोर इम्पॉर्टेंट because his ideology, his poetry continues to inspire Muslims even today, reinforcing their belief about their distinct identity, which Iqbal had highlighted in his 1930 address. Conclusion के 2 marks हैं 14 marks में, conclusion का 1 mark है question 1 के D part में. And as most of the people are saying, section 2 is most likely. आप टाइमलाइन के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात सुन ले जो चेंज आई है उनकी. पहले 1909 से 1919 तक वो सिर्फ 3 चीजें मांगते थे, मॉर्निंग रिफॉर्म, लखनऊ पैक्ट एंड मोन्टफोर्ट रिफॉर्म. नाउ दे आर आस्किंग फॉर रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल एज वेल because it was a political development by any definition of the word political development. अब आपने 1999 से 19 तक रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल को भी लिंक करना है. लिंक कैसे करना है? डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. एक क्वेश्चन उन्होंने पूछना शुरू किया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टुवर्ड शेपिंग द पाकिस्तान मूवमेंट. तो उसमें उन्होंने एक पार्लियामेंट्री रिफॉर्म दिया था, एक रिवर्सल ऑफ पार्टीशन बंगाल दिया था और एक लखनऊ पैक्ट दिया था. दे डिड नॉट इंक्लूड मोन्टफोर्ट रिफॉर्म. अब ऐसे क्वेश्चन में आप मोन्टफोर्ट रिफॉर्म अपने पास से नहीं ऐड कर सकते. यू आर नॉट एट लिबर्टी. इफ देयर आर 3 डेवलपमेंट गिवन, 3 पॉइंट गिवन, 3 फैक्टर गिवन, never ever add a 4th one on your own, because there is no concept of negative avoiding and cabbage, but you will yourself be sacrificing or wasting your time which should have been reserved for some other questions. बाकी क्वेश्चन के लिए आपका टाइम जाया हो जाएगा. आपने टाइम को बहुत वैल्यू करना है. Development is the key point in every paragraph, please. That is the tip of the day. जब तक आप डेवलप नहीं करोगे आपका आंसर डिस्क्रिप्टिव कहलाएगा. डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि अगर आप लिख रहे हैं कि जनाब फर्स्ट काउंटेबल कॉन्फ्रेंस में इतने लोग आ गए थे, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अप्रूव हो गया था, प्रिंसिपल स्टेट ने भी एग्री किया था, बट व्हाट इज द डेवलपमेंट, एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो डेवलपमेंट ये होगी कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मेंट दैट ए ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी फॉर द इंडियन प्रोविंसेस, एंड दैट मीन्स इंडियंस वर नियरिंग इंडिपेंडेंस. Today you are giving provincial autonomy, today you will be giving autonomy to the states. कल को आप पूरे के पूरे मुल्क को आजाद कर देंगे अगर आज आप प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे रहे हैं, उनको पावर ज्यादा दे रहे हैं. प्लीज रिमेंबर दिस की पॉइंट. बाकी पेपर 2 में आपको मैं बता दूं कि नई चेंज क्या आई है. अब आपके 12 चैप्टर नहीं है, प्लीज माइंड इट. लैंड एंड क्लाइमेट हैज बीन मेड 1 चैप्टर. दैट इज आई एम सेइंग विद ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी. चैप्टर नंबर 2 का नाम है नेचुरल सोर्सेज, और नेचुरल सोर्सेज में उन्होंने बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर दी हैं. वाटर सोर्सेज, माइनिंग, फॉरेस्ट एंड फिशिंग. ये 4 चैप्टर सब चैप्टर मिला के बनता है चैप्टर 2. अब आपके चैप्टर 8 है ज्योग्राफी में. दो सम ऑफ द बुक कंटिन्यू टू हैव 12 चैप्टर. आपके चैप्टर 8 हो गए. अब आते हैं हम उस क्वेश्चन की तरफ जो ग्रेड डिसाइडर होता है. आपने पेपर 2 में सिर्फ 2 एरिया पे प्रैक्टिस करनी है. 6 मार्क का वो क्वेश्चन जिसके एंड पे लिखा होता है डेवलप योर आंसर. एंड एज आई सेड इवन इन हिस्ट्री इट इज द की वर्ड डेवलपमेंट. तो यू नीड टू नो हाउ टू डेवलप ए पॉइंट. 6 मार्क के क्वेश्चन में भी आपने यही करना है. अगर वो कह रहे हैं टू व्हाट एक्सटेंट कैन पाकिस्तान कंट्रोल ए हाई बर्थ रेट, ओनली पिक 1 पॉइंट कि टू व्हाट एक्सटेंट पाकिस्तान कैन, and then pick another point to what extent Pakistan cannot. That means one helping factor fully developed and one limiting factor fully developed. Do not go for multiple reasons. They are never looking at that. And give 1 to 2 named example and give a simple conclusion. Though they encourage mature conclusion as well. लेकिन अभी जो असिस्टेंट एग्जामिनर से मेरी टॉक हुई है उसके मुताबिक वो कहते हैं सिंपल बच्चा लिखा है कि therefore I agree more with you be
that too will be granted 1 mark. But I still encourage you to do practice writing, mature judgment, in which you prove your viewpoint. कि आपने statement A या B में से जिसको prove किया है, आपने किस base पे किया उसे approve. Am I clear now? I think enough have been said about syllabus, format, time management. Time management बहुत आसान है कि आपकी 90 मिनट का पेपर है, 30 minutes each question. Geography में there is no time management. Nobody has ever complained. But one piece of valuable advice: never attempt extra question. Rather attempt 3 questions and take them to the distinction level. Now I'm ready to answer your question, please. आप में जिसके पास क्वेश्चन है, do bombard me with questions. I'm ready to answer them. किसी एक बच्चे ने पूछा था हिंदू मेला के बारे में. हिंदू मेला आपने याद रखें कि 1860s is the period of Hindu revivalism. 1867 two nation theory. 1867 Hindu Mela was founded. It was cultural and political event. ये मैं क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ आपकी किसी ने पूछा है. Gradually it became a political activity of Hindu-dominated Congress to purify India from non-Hindu elements and to promote Hinduism culture, Hinduism values, and Hindu philosophy even in politics. Any other question, please? Sir, Mr. Hamza Adil asks, is it possible? Please keep quiet so that everybody can avail the answer that I am going to share. Is it possible to complete the Pak Studies whole syllabus in 4 to 5 days? Yes. You see, it's hard work is a vector quantity, it's not a scalar quantity. Sir, please It means directed effort. If you plan that you are going to finish section 1 in 4 hours, that is perfectly humanly possible. If you plan you are going to finish section 2 in another 5 hours, it's very much possible. And section 3 is the greatest time taking. So section 3 is very helpful for your geography paper. Section 3 आपको geography में बहुत ज़्यादा help देता है. Never leave it. It is comfortably finished in 7 to 8 hours. Even for the beginner. Beginner का मतलब है जिन्होंने बहुत अरसे से इस सब्जेक्ट को हाथ ही नहीं लगाया. It's your will that matters. It's your concentration span and it's your methodology that matters. Yes, please. Any other question? This next one is not much of a question but appreciation. Sir IFTIKHAR, we love your resources and have come extremely helpful in preparing for the Pak Studies paper in the last few days. In the last 2 days. Okay, last 2 days, practice past paper from 2019 to 2023 only. Just have a general look at 2024 paper. No need to practice them more. Practice 2019 to 2023, both May and October, summer and winter papers. And you can comfortably do it. Right? And definitely my notes are going to help you a lot. And I am available on WhatsApp. I am still have to answer around 225 questions which are waiting on my WhatsApp box. Okay? Yes, please. Ms. Abiha Shahzeb Rana asks, how successful was Pakistan in introducing Islamic reforms 1947 onwards? Please be attentive. आपने याद रखना है कि Cambridge does give you a shock at times. They pick a very old question. I very well remember 2 years ago they picked a question from 2003. That was about the effects or results of War of Independence. And since I was the first one to have made this question was taken from there, alhamdulillah. ये क्वेश्चन जो इन्होंने मुझे पूछा है, जिसने भी प्लीज याद करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन की असल वर्डिंग थी 2 दफा आया पहले, हाउ सक्सेसफुल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बीन इन इस्लामाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इस्लामाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आप याद कर लें Islamic clauses of 1956, 1962 and 1973 constitution. And then do add, in 1974, an amendment was made in the 1973 constitution by Zedi Bhutto to redefine the word Muslim in the wake of anti-Qadiani movement that had reached its peak in 1974. And then greatest weightage will be Zia's reform
how he played with 1973 Constitution in the name of Islam. तो उसने जो हदूद ऑर्डिनेंस किए थे, ब्लास्फेमी लॉ इंस्टीट्यूट किया था, इस्लामिक बैंक को सेट किया था, इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल एस्टैब्लिश की थी एंड फेडरल स्टेट कोर्ट किया था. 1988 to 99 is the tricky area. Where Bhutto you will write in the failures because she had a liberal approach. People's Party never had the religious card in its manifesto. Nawaz Sharif was rather clever person, smart politician. So he introduced Sharia bill, but he never took it to the Senate. So he promised with the religious parties because he first time was elected from the platform of a group of religious parties, IJI, Islamic Jamhuriyat Ittihad. So he knew how to tackle this issue. So successes बनेगी आपकी सारी इस्लामिक प्रोविजन, ज़ियाद इस्लामाइजेशन एंड शरीयत बिल. फेलियर बनेगी कि जितनी भी आपकी इस्लामिक रिफॉर्म है, इनमें जो बॉडी बनाई गई थी, इट वाज कॉल्ड एडवाइजरी काउंसिल. इट वाज नॉट लेजिस्लेटिव बॉडी. ये लॉ मेकिंग बॉडी नहीं थी. ये सिर्फ गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकती थी, जस्ट लाइक मोरलेम इनटू रिफॉर्म. A member of the council only could advise the British government. They could not make laws, they could not change laws, they could not annul the existing laws. And then you write a judgment. I hope I have answered the question, whoever asked this rare question. It's a rare question, and rare questions are usually set after a lapse of 8 years, 10 years, at times 15 years, and at time I said कि 2003 का question 2022 में पूछा गया है 23 में कि did Indians achieve anything from the war of independence? Am I clear? Yes, please. How can I score more marks with minimum effort as possible? How can I score more marks with as much minimum effort as possible? Yes, as I said, take hard work as a vector quantity. आप बहुत कम टाइम में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. If you simply look at my notes and practice past papers and keep in your mind the key point that I have shared with you, developing the answer in both papers, paper 1 and paper 2. और paper 2 ये दो एरियाज हैं जो आपने स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. All those questions where at the end it is asked, develop your answer. And D part of the question, to what extent and two statements. आपने याद रखें to what extent वाला और two statement वाला बड़ा tricky question होता है sometime. So look at the tricky questions and practice them first, and then things will be easier for you. Any other question, please? Yes, sir. Mr. Hussain bin Iftikhar Chima asks, what is the golden tip for geography? Well, golden tip for geography is that can remember they don't make one question from one chapter. They structure question in such a way that 2 or 3 chapters are assimilated in the question. So never be too selective in geography paper, please. Geography paper में आपने too selective नहीं होना. Look at the trend of latest papers. Do not go further backward before 2018. 2018 से पीछे जाने की गलती मत कीजिएगा ज्योग्राफी के पेपर में. तब फॉर्मेट और होता था सिवाय डी पार्ट के. डी पार्ट में भी आपको बड़ा डिफरेंट फॉर्मेट मिलेगा. 2019 onward is the keyword, key point, tip of the day. 2019 onward आप जितने डी पार्ट करेंगे, जितने वो वाले सी पार्ट करेंगे, you should develop your answer and always underline the keywords. Underline the keyword will take you to the highest level because that will focus your attention to the point which is being asked. It is a converging technique. It avoids divergence. अगर आप अंडरलाइन करते हैं कीवर्ड तो एज इफ यू आर यूजिंग ए मैग्नीफाइंग ग्लास, आप एक कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं जिससे आपकी एनर्जी कन्वर्ज हो रही है. यू आर प्रिवेंटिंग डाइवर्जेंस ऑफ एनर्जी विच इज ए वेस्टफुल एक्टिविटी. आप ज्योग्राफी में करें, पॉपुलेशन का एक क्वेश्चन हर सूरत आता है एंड एट टाइम दे हैव स्टार्टेड लिंकिंग ज्योग्राफी विद चैप्टर 1 लैंड एंड क्लाइमेट. उसके साथ लिंक करना शुरू कर दिया. इंडस्ट्री को पावर सोर्स से करते हैं, जैसे अभी किस साहब ने कहा था, कंटेम्प्रेरी इश्यूज को वो करते हैं हाईलाइट. जैसे व्हाई डिड पाकिस्तान सपोर्ट पैलेस्टाइन कॉज, तो मैं एक क्वेश्चन देख रहा था कि डिस्क्राइब द पैलेस्टाइन कॉज इन 4 मार्क्स. अब 4 मार्क्स में सुनने बहुत आसान है कि पैलेस्टाइन कॉज emerged for the first time in 1948 when Muhammad Ali Jinnah warned USA of the consequences of creating the state of Israel. And please remember, never use any aggressive
language against Israel. Do not make your answer controversial. That's the British policy, that's the world policy, and our hands are tied. So never ever drag yourself or take yourself to controversial arena. अपने आप को गलत साइड में जाना. दूसरा पॉइंट होगा कि Palestine cause became more prominent after the failed attempt to burn Al-Aqsa Mosque by an extremist Jew who was acquitted by the Israeli court, Michael Rohan. And then Bhutto emerged on the scene and he began to unify the Muslim world 1867 onward. So first OIC summit was held with the effort of the Bhutto in Rabat, the city of Morocco, and second was held with his own effort in your city Lahore in February 1974. And Palestine issue, you will say, it remains a bleeding wound till today. And you have scored 4 out of 4 marks. Why has Pakistan supported Palestine? Because always write a very balanced answer. A feeling of brotherly Muslim living in Palestine in difficult times. And again, do not mention Israel. And then you will highlight the effort how that Bhutto mobilized to highlight the Palestine cause. And number 3, Pakistan is a signatory of UN Charter, which is aimed at promoting global peace and preventing a third world war. And you have scored. These are developed points. Rest is given in the book. Sir, Alexander the Great asks, Sir, can you please recommend some website sources for additional info other than ChatGPT or Wikipedia? You see now ChatGPT and AI are very informative, very helpful tools. Wikipedia remain, but Wikipedia at times gives you conflicting information. Wikipedia में भी जो link आपको सबसे ऊपर नजर आता है ना top पे, that is usually most reliable. Otherwise, I can recommend you, there are some books, for example. One book I am going to write, its review is by famous lawyer Hamid Khan. Constitutional and Political History of Pakistan. अगर आप वो एक book पढ़ लें, you don't need any Wikipedia, you don't need ChatGPT, you don't need even AI. I am going to write its review because I had a recent meeting with Mr. Hamid Khan. दूसरी है आपके हसन असरी साहब की बुक, वो भी पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है. इन 2 बुक के होते हुए आपको हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में देयर वॉल्यूमिनस बुक बड़े आराम से आप ट्रेस कर सकते हैं उसके चैप्टर्स. बाकी एक बुक है लॉरेंस जायरिंग की मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, एक के अजीज की, एक और बुक है अभी मार्केट में ये रिसेंटली आई फॉरगॉट द ऑथर्स नेम, that is Pakistan in the contemporary world. Yes. So you don't have to go for multiple websites for O-level examination. These many books are good enough. Otherwise, I am going to share many new questions in my WhatsApp group, in the academy, and regardless of the branch of Greenhall, anybody can approach and have access to those new questions. For example, I am going to make a list today and answer them. Okay, who was Lord Lytton? This has never been asked. What was the Ilbert Bill? That has never been asked. And according to the principal examiner, these are possible questions they may be asked. Ilbert Bill आपने याद से 1880s में British ने introduce कराया था, under which a British could be tried in an Indian court for the first time, with the condition that half the jury comprised Europeans and only half Indians. So this is how British were gradually pressurized. इसके अलावा भी बहुत सारे न्यू क्वेश्चन है. Who was Lord Lytton? Who was Lord Wavell? Because ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए हैं. Who was Lord Wellesley? ये भी नहीं पूछा गया. एक मैंने नया क्वेश्चन अपने स्टूडेंट से शेयर किया था कि was his victory in Carnatic War the most important reason why Robert Clive was appointed the governor of Bengal? That's an excellent question and answer written is also excellent, inshallah. Sir, Imran Khan asks, I wanted to ask that I heard different opinions regarding the RTG. Were they a failure or a success? RTCs always write 2 paragraphs of successes first, please. ये इंस्ट्रक्शन रिसेंट है केम्ब्रिज की जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, प्लीज रिमेन अटेंटिव. 2023 के एंड में इंस्ट्रक्शन ये इशू हुई है कि पेपर 14 मार्क का जो क्वेश्चन है, ये 10 मार्क का, उसका फॉर्मेट चेंज हो गया. अब आपने 4 पैराग्राफ बनाने हैं, 2 सक्सेस के 2 फेलियर के, चाहे 3 सक्सेस के 1 फेलियर के, चाहे 3 फेलियर और 1 सक्सेस के, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. एंड 5th पैराग्राफ इज इवैल्यूएशन, ए मैच्योर जजमेंट. आरटीसी की सक्सेसेस यही थी
first, second or third में federal form of government, attendance maximum in second round of conference, Gandhi Irwin Pact, and agreement on abolition of hierarchy, and agreement on creation of new provinces, and agreement on princely states becoming the federation of India, part of federation of India. Failure होगी number one, a first round of the conference, largest political party, Congress, was absent due to Gandhi being jailed. Second, deadlock between Gandhi and Jinnah, and there was change in government in England. Labour Party was losing election and it was going to be replaced by a coalition government. And failure number three of third round of the conference is it had minimum attendance. Jinnah had quit politics, therefore he was not given a formal invitation. Gandhi too had restarted his non-cooperation movement, therefore he was jailed. So it was ended as formality. The only achievement, the failure आपने लिखी है तो फिर में failure ही लिखेंगे. फिर आपने गलती से भी उसमें success नहीं लिखनी. Please mind it. ये गड़बड़ आपने नहीं करनी. अगर आप success लिख रहे हो तो सिर्फ success की paragraph होंगे. अगर आप failure लिख रहे हो तो सिर्फ failure होगी. End पे judgment होगी. Do not make success and failure in one paragraph. ये अपने पास सब लोग नोट कर लें. Never ever mix success and failure in one paragraph. Reserve separate paragraph for each. These are latest instruction by the Cambridge. Whatever way old notes contain, but wherever I have taken classes in whatever branches, I have strictly and religiously followed this strategy, and most of my students have also been following this. हाँ अगर क्वेश्चन आता है कि जिनास 14 पॉइंट पर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट, इसमें भी फेलियर कोई नहीं होगी. सक्सेस 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 की 4 पैराग्राफ बन जाएंगे. कोई माइनर फेलियर हुई भी तो आप एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं. No further questions, sir. So I hope I have helped you a lot. Thank you very much.